आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आप सबके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स इन शॉर्ट टर्म फंड्स लेस देन 1 ईयर? कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस मार्केट, मनी मार्केट या फिर कॉमोडिटी मार्केट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी, मनी मार्केट डील्स विद द शॉर्ट टर्म फंड्स usually with a maturity of less than 1 year. Examples include treasury bills आ जाएगा, commercial paper, call money, certificate of deposits. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट ट्रेडेड इन द मनी मार्केट? ओके, ट्रेजरी बिल, इक्विटी शेयर्स, कॉल मनी या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इक्विटी शेयर्स। Absolutely right. Equity shares are a part of the capital market, not the money market. Money market deals with the debt instrument that are short term and low risk. Capital markets include long term instrument like equity shares, preference share, debentures. क्वेश्चन नंबर 17 आप सबके स्क्रीन पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट इज ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट वियर सिक्योरिटीज आर इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम? सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, प्राइमरी मार्केट या फिर रिटेल मार्केट? आंसर इसका सी हो जाएगा, प्राइमरी मार्केट। The primary market is also known as a new issue market where companies issue securities like shares or debentures to the public for the first time. Investors buy directly from the company. This helps raise fresh capital for business activities. Question number 18. What is the main difference between the primary market and the secondary market? Primary is for loans, secondary is for savings. नहीं. Primary is government only, secondary is private only. नहीं. Primary involves fresh issues, secondary involves trading of existing securities. ये ठीक लग रहा है। D. Primary is offline, secondary is online. नहीं भैया नहीं। C. Exactly right. The key difference is primary market, new securities are issued for the first time by companies. Secondary market, existing securities are bought and sold among investors. The company is not directly involved in these transactions. ठीक है। 19 पर पहुंचे तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द, नॉट पूछा गया, नॉट अ टिपिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट? डिबेंचर, प्रेफरेंसेस, कॉल मनी, इक्विटी शेयर्स। बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए तो कॉल मनी। Spot on. Call money belongs to the money market, not the capital market. The capital market deals with long-term investments such as equity share, debentures, preference shares. Call money is very short-term, often overnight borrowing between banks. अच्छा ये याद रखना भैया, call money is very short-term, often overnight borrowing between banks.